Very good afternoon. So some of you know me, some of you don't know me. Okay. How many of you are new, sitting for the first time? Yes, we have 6 to 7 people who are new. Fine. So what I'll do is, Acha, what was the last topic we taught? I taught in the class. We've done plate tectonics theory. We've done evaluation of plate tectonic theory. So what I'll keep today is, I'll keep today as a revision session. We'll just revise things. There are two purposes for this. One, I have full faith आपने revise नहीं किया. Second, many of you are new. As you are new, we'll start revising things. I want you to, come at a particular platform, a particular place, so that we all are together. Okay. So let me first start off with the revision part, with the other parts, right? ताकि आप लोग, basically my preference are you for now. ठीक है. आप लोग को तो मैंने पढ़ा दिया, आपका काम था रिवाइज करना. So for me, you are my preference for now. ठीक है. ऐसे some of them are looking at me कि अच्छा, but then fine. So let me start off with geography. Okay. If I talk about geography का subject matter. When I say subject matter, हमारे लिए, अच्छा, all of you are comfortable with Hindi, English combination? Okay. So for us, geography is about physical geography and human geography. अभी तक के लिए आपको लगता है geography is about mountains, plateau, plain, coast, hilly regions, rainfall. आपको यही लगता है. That is what geography is. So what is geography? Geography as per you is the physical features on the surface of earth. When I say physical features on the surface of earth, it is about mountains, it is about hills, plains, plateau region. It's about, probably because plain, plateau, mountain hai, it is about mineral resources. It is probably about the climatic features. Let's say monsoon climate, let's say equatorial climate. ठीक है. तो आपके लिए geography है. It starts here, it ends here. But then geography is much more. What is geography? We also try to explore the ocean. We try to explore the ocean and we try to see that what all resources are there in the ocean. One, क्या क्या resource मिलते हैं. We try to see that can I use ocean resources for my energy needs. Tides, waves, OTEC, ocean के resources. क्या ocean के अंदर diverse landforms हैं? Are there diverse landforms in the ocean surface? ये भी geography में. Apart from this, because आप physical features पढ़ रहे हैं, ठीक है? Physical features, जैसे for example plateau, okay? Or for that example Eastern Ghat. Because you are studying, linked to physical features are your resources. Are the resources. Linked to resources are the minerals. One of the resources, mineral resource. ठीक है. उससे क्या linked है? उससे आपका link है industries. Mineral resource, then linked to that is industries. Linked to industries is your economic development. How far a place would develop. Why is Japan so developed and why is India not so developed? अगर एक question पूछे तो, why is Japan developed? Why is India not developed? As developed. Manufacturing industries. So you think Japan में बहुत manufacturing industries? Exactly. It is not to do with the physical features. It is to do with the human features. Japan, अगर topography देखो जापान की तो mountainous region है, ठीक है? Circum Pacific Ring of Fire है, volcanism है, earthquake है,
सुनामीज हैं, माउंटेनस टोपोग्राफी, बहुत कम जगह पे प्लेन्स हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो मेजर इंडस्ट्रीज वहां पे क्या है, ठीक है, दे हैव डन टेक्नोलॉजी, दे हैव यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, फिशिंग you have currents, ocean currents meeting, they are good fishing grounds. Agriculture वहाँ हो नहीं सकता, mountainous topography, not much agriculture. In the form of agriculture you have fishing, some bit of manufacturing, technological prowess, reverse engineering. Japan is famous for reverse engineering. They will take the technology from outside, they'll open and they'll think अच्छा ऐसा है क्या, we'll also make like this, and then they'll make. So they'll do reverse engineering. So it is not directly to do with the physical features, it is to do with the ह्यूमन रिसोर्स। तो फिजिकल फीचर्स आपकी इंडस्ट्री को लोकेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन मिनरल रिसोर्स रहेगा तभी तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, रिसोर्स ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहाँ से आए, ठीक है। रिसोर्स अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल घाट्स, ईस्टर्न घाट्स पे टू बिल्ड द रोड्स इज टफ, बट प्लेन टोपोग्राफी बिल्डिंग द रोड्स इज इजी। सो योर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, यस दैट डिपेंड्स ऑन फिजिकल फीचर, फिजिकल टोपोग्राफी कैसी है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फीचर्स। ह्यूमन फीचर्स यानी क्या, द काइंड ऑफ एजुकेशन, द लेवल ऑफ एजुकेशन, द लेवल ऑफ स्किल दैट वी हैव, हाउ व्हाट इज द आउटलुक ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द ह्यूमन। तो यहां से ज्योग्राफी ट्रांजिट करती है टू गवर्नेंस, टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी, टू सोसाइटी। ज्योग्राफी ना कस्प पे है, सर्टन मीटरोलॉजिकल स्टडीज तो क्लाइमेट पढ़ेंगे, जियोलॉजी तो फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, ओशन स्टडीज तो ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, तो कस्प है, ये ज्योग्राफी का स्टार्ट है, कोर है, बट इट ट्रांजिट्स, इट इज नॉट सिंपली अबाउट फिजिकल फीचर्स, इट ट्रांजिट्स टू ह्यूमन फीचर्स लाइक ह्यूमन स्टडीज लाइक एजुकेशन, सोसाइटी से लिंक हो जाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटी से लिंक हो जाता है। तो ज्योग्राफी अपने आप में ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारी एग्जामिनेशन के लिए क्या चाहिए, हमारी एग्जामिनेशन के लिए हम कुछ यूनिट्स लिख सकते हैं, द यूनिट्स लाइक जियोमॉर्फोलॉजी और द यूनिट्स लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, वेर इन यू स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ये पढ़ रहे हो, दैट इज फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। द सेकेंड एस्पेक्ट इज क्लाइमेट स्टडीज, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट स्टडीज, ओशन स्टडीज, यहां पे लगती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, you need to link things, यहाँ पे लगता है scientific bent of mind. When I say a warm air packet can hold more moisture, एक warm air packet है वो ज्यादा moisture hold करने की capacity रखता है, can have the capacity to hold more moisture, whereas cold air has less capacity to hold moisture, ठीक है। तो some of you would easily grasp this कि हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि molecules के बीच में space है, air molecules के बीच में space है, तो पानी पकड़ के रख सकता है। अगर molecules के बीच में dense air, cold air is dense air, molecules are very near to each other, tightly packed, so there is not much space, तो पानी नहीं होल्ड कर सकता। तो कुछ चीजें, ये जो फर्स्ट 3 एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के, द फिजिकल ज्योग्राफी, द क्लाइमेट एस्पेक्ट, हियर यू नीड सम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसमें लगती है, क्लाइमेट पे, बिकॉज थिंग्स आर लिंक्ड टू वन अनदर। एंड द नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट वील डू द फिजिकल ज्योग्राफी, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज climate. Once that is covered, then we have ocean studies. The ocean, ocean resources, ocean physical features, ocean में क्या landform है, that we'll study. Once that is done, then we'll move on to India. India के क्या physical features हैं, India में कहाँ mountain, plain, ये सब है. Where do you have, what is the climate of India? How is the climate of India being influenced? तो पहले world पढ़ेंगे, फिर India पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री पढ़ेंगे। द ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट इज कवर इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इट टॉक्स अबाउट ऑल द इंटरवेंशंस दैट वी हैव मेड, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज का कैसे यूज किया हमने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। व्हाट अबाउट द ट्राइबल्स, द ज्योग्राफी आल्सो स्टडी ट्राइब्स, कि कहाँ पे मेनलैंड पॉपुलेशन है, कहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन, और क्यों उनके डेवलपमेंटल पैरामीटर्स लाइक एजुकेशन, लाइक स्किल, like health, like sex ratio, ठीक है, is different. एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा है that the sex ratio is more adverse among scheduled caste as compared to scheduled tribes. तो ये सोसाइटी में भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द बेसिक, सबसे इमीडिएट फैक्टर होता है फिजिकल ज्योग्राफी, बट ह्यूमन ज्योग्राफी इज द मेन बेसिक पैरामीटर दैट इन्फ्लुएंसेस ईच ऑफ आवर एक्टिविटीज। तो पहले तो माय फर्स्ट
5-10 minutes is on that what is geography. Geography है क्या? It's like geography study physical features, geography study climate, geography studies ocean, geography studies industry, geography studies trade transport, geography studies human resources. क्या पढ़ रहा है? सब कुछ तो पढ़ रहा है, बिकॉज ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ता है. यस, बिकॉज ज्योग्राफी स्टडीज मेनी थिंग्स. तो बोलते हैं ज्योग्राफी का अपना कोई सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है नहीं. ज्योग्राफी करता क्या है? ज्योग्राफी एक अप्रोच देता है आपको. इट गिव्स यू एन अप्रोच ऑफ व्हाट? इट गिव्स यू एन अप्रोच ऑफ हाउ टू लिंक थिंग्स. ठीक है, आर यू एबल टू लिंक द क्लाइमेट ऑफ Odisha to the topography of Odisha? Within Odisha also you will have variations. Overall climate, a tropical climate, but then within Odisha also you will have variation. Towards Eastern Ghat different, towards some plains it is different, towards northern Odisha it's different, towards southern Odisha it is different, towards the western part of Odisha is different. Are you able to link the climate of Odisha with the physiography of Odisha? Physiography means क्या? पहाड़ होगा तो अलग क्लाइमेट होगा, प्लेन होगा तो अलग होगा, प्लेटू वाला और वेस्टर्न साइड या नॉर्दर्न साइड है तो वो अलग क्लाइमेट हो जाएगा. तो आर यू एबल टू लिंक दैट? फिजियोग्राफी को लिंक करना है क्लाइमेट के साथ. एक बार फिजियोग्राफी और क्लाइमेट को लिंक कर लिया तो क्या आप लिंक कर सकते हो एग्रीकल्चर से? कोस्टल ओडिशा वुड हैव डिफरेंट क्रॉप्स whereas western Odisha would have different crops. So are you able to link physiography and climate with what? Agriculture. Are you able to link कि हाँ कोरापुट, बोलांगीर, कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट माइनिंग होती है, बॉक्साइट माइनिंग होती है तो एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं है तो you have what? These are one of the poorest districts, some of the poorest districts, tribal population, poorest district. Are we able to link all of them? Physiography कहाँ से स्टार्ट हुआ? पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, प्लेटू का पार्ट है, मिनरल्स मिल रहे हैं, बॉक्साइट मिल रहा है, वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा? ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ऑल्टरनेट हॉट ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. बॉक्साइट ऊपर आया, बॉक्साइट के कारण रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज है, इंडस्ट्री है तो फिर आप उसको डेवलप. अच्छा, पॉपुलेशन कौन सी है? तो हम क्या पूरा लिंक कर पा रहे हैं? दैट इज व्हाट इज योर ज्योग्राफी. लिंकिंग फिजियोग्राफी टू क्लाइमेट, टू एग्रीकल्चर, टू इंडस्ट्री, टू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. So what is geography is not per se a subject matter, it is about linking things. आपके लिए लिंक और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? Because in your mains you will not write unidimensional answers. In your mains you will be an administrator. You will write multi-dimensional answers. So linking becomes further important. ठीक है. So how do I start off my subject? I start off my subject by, firstly, what is the topic that I first cover is the solar system. Solar system is generally a part of your science, right? Wherein you study astronomy and science there. But some part of understanding I need for me to establish a link with the physical geography. ठीक है? Especially सोलर सिस्टम की मुझे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ क्यों समझना चाह रही हूँ? व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? बिकॉज इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लिंक्ड टू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई डज योर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इंटीरियर में कुछ है. Why are there volcanoes? Why are there earthquakes? For me to understand two important theories, continental drift theory and plate tectonic theory. तो मुझे interior of earth समझना है. If I'm understanding the interior of the earth, मुझे solar system के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए. So though this is a part of your science, I start off my classes with solar system. ठीक है. सोलर सिस्टम में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. We have asked questions in 2011, 13, 14, 15. ठीक है. सोलर सिस्टम में दो चीजें. One is about understanding certain terms. Understand the terms. And in solar system you have a different
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ, स्टार्ट कैसे हुआ हमारा यूनिवर्स, कैसे स्टार्ट हुआ हमारा अर्थ, कैसे बना, या फॉर दैट मैटर सोलर सिस्टम कैसे बना. ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एटसेट्रा. इसकी अगर थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझेगा. एनीबडी कैन टेल मी, नॉट द ओल्ड, नॉट द प्रीवियस क्लास, द न्यू स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ये मेरा अर्थ है, सिक्स थाउजेंड. सो इफ 6,000, around 6,371 kilometer. ठीक है. So if I actually cut the earth in half, if I cut the earth in half and I give a slice of the earth, I cut the earth in half and I give a slice of the earth, ऐसे. ठीक है. तो ये इंटीरियर में जा रहे हैं, आप जिस पे खड़े हो सरफेस है, वी आर मूविंग इनटू द इंटीरियर. इंटीरियर समझने के लिए मुझे, अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट लेयर, क्रस्ट. व्हाट इज द सेकेंड लेयर, mantle. What is the third layer, crust, mantle and core. The nature, what is the nature of crust? Crust is solid. We are standing on a solid surface, solid. What is the nature of mantle? पुरानी क्लास जवाब ना दे. What is the nature of the mantle? New class. Solid है, liquid है. Your new class. नया एडमिशन है. Okay. What is the nature of the mantle? Solid, semi-solid, liquid. It is semi-solid. It is semi-solid, not liquid. What is the nature of core? Outer core and inner core. How is the outer core? It's liquid in nature. How is the inner core? It is solid in nature. The outer core is liquid, not semi-solid. What is semi-solid? Waxy like. You've seen wax. जब वो wax melt होके solidify होना start करता है, solid. It is starting to solidify, but it's still waxy like. There can be some molten wax if the whole wax can is there. वो solidify हो रहा है, तो कहीं कहीं molten भी रहेगा, तो solid है, semi-solid है. ठीक है. Not exactly liquid, not exactly solid, semi-solid. अगर मुझे ये समझना है, at least I should have some idea about the solar system, the terms and the evolution of universe. So I'm moving on. I'll first cover this. ठीक है. We'll understand certain terms. We'll understand the evolution of a universe, a basic crux of things, evolution of universe. After evolution of universe, we have evolution of solar system. मेरे को लिस्टिंग करने दो, so that it develops like a storyline. We understand certain terms. We understand certain terms. We understand evolution of universe. We understand evolution of solar system. इसमें बहुत important theory है एक nebular hypothesis. ठीक है. I would want you to take the listing of this. आज की क्लास के लिए take the listing of it. So just do the listing. ताकि आपके पास एक टिक मार्क करने के लिए पॉइंट्स हैं कि हाँ ये हुआ है. टर्म्स, evolution of the universe, evolution of the solar system, evolution of the solar system. We then write the interiors of the earth, the interiors of the earth. Once we understand the interior of the earth, then we'll move on to understanding continental drift theory. Continental drift theory. Once we understand the continental drift theory, इसमें what is the theory? What were the limitations? What is the theory? What were the limitations? And उसके पहले what were the assumptions?
what were the assumptions? Assumption क्या थे, theory क्या है, limitation क्या है. Once this is done, continental drift theory is done, we move on to understanding the post drift studies. Post drift studies. Okay, in the post drift studies what you have sea floor spreading. sea floor spreading, ये सब terms आपने सुने हैं कहीं? Have you heard these terms? sea floor spreading. How many of you have not heard this term? New class, please tell me. नहीं सुना है? Feel free to raise your hand because that will give me an idea कि मुझे कैसे करना है. You've not heard sea floor spreading? You've not heard sea floor spreading? Or you've not heard? Okay, 4, 5, 6. एक एक करके हाथ उठा रहे हो, एक साथ हाथ उठाओ. Okay, how many from the new class have heard about this term? तुम न्यू क्लास के थोड़ी हो, तुम क्यों हाथ उठा रहे हो? मिहिर, I remember your name. सुमन. ठीक है. So post drift studies, sea floor spreading. Sea floor spreading. Okay. अब लिख लो, even if you have not heard, convectional current, hypothesis, convectional current hypothesis, and then finally you move to plate tectonics theory. Finally you move to plate tectonics theory. तो पहले तो ये इंडेक्स कर लेंगे, ठीक है, कि चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके. Now understanding the terms of universe, कुछ टर्म्स समझते हैं, ठीक है. Let us understand certain basic terms. When I say understanding certain basic terms, let's understand what is a, बहुत ही simple, I'll just pick you from a very simple place to higher level. धीरे 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 we'll proceed. Let me know if you understand this term. Nebula. Nebula. हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, देयर आर क्लाउड्स. क्लाउड्स किसके क्लाउड्स? हमारे जैसे क्लाउड्स ने जो बारिश देंगे. क्लाउड्स इज एग्रीगेशन. एग्रीगेशन है किसका? डस्ट का. डस्ट, डेब्री, जो भी बच जाता है, कोई चीज टूटती है तो कोई चीज बच जाती है, उसको बोलते हैं डेब्री. तो डस्ट, डेब्री. यू हैव गैसेस, ठीक है. तो ये जो डस्ट, डेब्री, गैसेस के जो क्लाउड्स हैं, जिससे आपका सोलर सिस्टम भी बना है, जिससे आपका सन भी बना है, जिससे आपका अर्थ भी बना है, दैट इज कॉल्ड एज नेबुला. सो व्हाट इज नेबुला? अ क्लाउड ऑफ डस्ट, डेब्री एंड गैसेस. यू कीप ऑन राइटिंग एज आई एम ट्राइंग टू स्पीक. बाकी लोग, यू कैन, this is a revision session. What you can do is, you can, I know you will doze off in case you just look at me and listen. What you should do is open your pages जहाँ पे हमने ये सब लिखा है, उस पे ऐसे उंगली ही चलाओ, बट कुछ मोशन रखो ताकि सो नहीं जाओ. अदरवाइज इफ यू लिसन यू विल स्लीप, ठीक है. एंड देन आई डोंट वांट हाफ ऑफ द क्लास टू बी स्लीप, यू नो, asleep. तो some of you keep on writing, some of you in 2-3 hours we'll be at a comfortable pace, all of us, ठीक है. So some of you keep on writing, some of you please keep on underlining or keep on at least scrolling your finger through the things. Now एक काम करो, who has made good notes? I remember one used to say, तुम भी बनाते थे ना? हाँ, तुम भी बनाते थे अच्छे नोट्स. दो अपनी कॉपी, ठीक है. तुम बाजू की कॉपी में देखो. What is his name? What's your name? इसमें लिखा होगा. हाँ, I remember you used to make, yes. ठीक, ठीक है. तो पहले कुछ टर्म समझते हैं. नेबुला. नेबुला इज द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डेब्री. डस्ट, डेब्री एंड गैसेस. ओके. ये नेबुला से सब कुछ बना है. फ्रॉम द नेबुला वी हैव द अर्थ, वी हैव सोलर सिस्टम, वी हैव सन. The universe was formed,
because of, the universe was formed because of Big Bang. Big Bang. ठीक है, बिग बैंग यानी क्या? देयर समथिंग, देयर वाज, जो आज यूनिवर्स आप देखते हो, एवरीथिंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल टाइनी बॉल. इन अ सिंगल टाइनी बॉल एवरीथिंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो सिंगुलैरिटी. यू कॉल दिस एज सिंगुलैरिटी. नाउ व्हाट हैपेंड? There was an explosion, Big Bang, and then everything got formed. Matters got formed, forces got formed, laws of motion got formed, and your galaxies got formed. So there was that get formed. And now what happened? This is still expanding. It is still this is getting expanded. तो हमारा जो यूनिवर्स बना है, that has been formed because of what? That has been formed because of the Big Bang. ठीक है, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. यूनिवर्स बना कैसे? सब कुछ जो भी आप आज देखते हो, it was tightly packed in a small ball, in a small tiny ball. Small tiny ball, इसके it has what? It has infinite mass. कितना मास है? इनफाइनाइट. कितनी डेंसिटी है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट डेंसिटी and have very low volume. Very low volume. Infinite mass, infinite density and very low volume. This tiny ball exploded. क्यों explode किया? We don't know. इसके पहले क्या था? We don't know. क्या फिर से पूरा यूनिवर्स एक सिंगल टाइनी बॉल में जा सकता है? यस. क्या फिर से एक्सपेंशन हो सकता है? यस. ठीक है, इसके पहले क्या था? वी डो नॉट नो. यूनिवर्स का फॉर्मेशन अभी भी मिस्टीरियस है. ठीक है, तो कुछ मिस्ट्री के पन्ने खुले हैं, कुछ मिस्ट्री के पन्ने नहीं खुले. क्या पता है आपको? एक सिंगल टाइनी बॉल था. द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड. As the tiny ball exploded, there was clouds of all, the clouds of dust, the clouds of debris, the clouds of gases, जिसको आप नेब्यूला कह रहे हो. ये नेब्यूला था, हर जगह पे नेब्यूला था, everywhere it was just nebula. Then what happened? The nebula, जो पूरा dust debris है, start coming together. They start coming together to form what? To form galaxies, to form solar system, to form your various planets. एक छोटा टाइनी बॉल एक्सप्लोड, पूरा डस्ट, पूरा क्लाउड ऑफ गैसेस, एंड देन धीरे धीरे क्लाउड कम टुगेदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एज दे कम टुगेदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यू फॉर्म प्लैनेट, यू फॉर्म सोलर सिस्टम. बड़ा सा नेबुला, बड़ा क्लाउड कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग सोलर सिस्टम, और बड़ा क्लाउड कमिंग टुगेदर यूनिवर्स. तो सब कुछ एक साथ हेल्ड है. ठीक है, यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर यू हैव योर अर्थ. बना किससे? नेबुला से. नेबुला क्या था? This one. So I said that the formation of universe. So it is like formation of universe likha. What did you write? What did you write? The universe was formed because of the Big Bang theory. According to this theory, 13.7 billion years ago, 13.7 billion years ago, universe was extremely compact system. 13.7 billion years ago, universe was extremely compact system in a form of dense tiny ball. In the form of dense tiny ball. Full stop. It had infinite density, comma, infinite mass, and low volume.
and low volume. Then a cosmic explosion happened. Then a cosmic explosion happened. And the tiny ball expanded in all direction. Full stop. The matter was scattered. The matter was scattered in the form of cloud of dust. Cloud of dust and debris. Cloud of dust, debris and gases. Bracket में you could write nebula. 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 ठीक है? Full stop. The universe is still expanding. The universe is still expanding. As proposed by Dr. Hubble. As proposed by Dr. Hubble. Dr. Hubble ने देखा कि यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है. As proposed by Dr. Hubble. The rate at which universe is expanding. The rate at which universe is expanding is referred to as Hubble constant. Hubble constant. जिस रेट पे एक्सपैंड करता है उसको बोलते हो हबल कांस्टेंट. ठीक है, अब ये तो मुझे समझ आ गया कि टाइनी बॉल था, टाइनी बॉल एक्सप्लोड किया, नेब्यूला बना. द नेब्यूला वाज इन द फॉर्म ऑफ nebula was in the form of the dust, debris, gases. तो नेब्यूला बन गया. अब नेब्यूला से यूनिवर्स से मतलब यूनिवर्स बिग बैंग से आपकी गैलेक्सीज कैसे बनेंगी, सोलर सिस्टम कैसे बनेगा, अर्थ कैसे बनेगा. यूनिवर्स समझा एक छोटा बॉल था, एक्सप्लोड हुआ, गैसेस आई, गैसेस दे वर स्कैटर्ड. ये गैसेस को आप बोलते हो नेब्यूला. दिस नेब्यूला एक्चुअली इवेंचुअली फॉर्म्ड व्हाट, यही नेब्यूला ने आपका गैलेक्सीज बनाए, यही नेब्यूला ने आपका सोलर सिस्टम बनाया, यही नेब्यूला ने आपका प्लैनेट बनाया. हुआ क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन? सो देयर इज दिस नेब्यूला, दिस इज द नेब्यूला. dust or debris. You have dust, you have gases, you have the gases. This is your entire universe. Okay, पूरे यूनिवर्स में यही. What will happen eventually at some places where the gravity is more, the things they start coming up together. The things they start coming up together. If you observe at a very large scale, you call this as what? A galaxy. जब बहुत large scale में उसको observe करते हो, galaxy. बहुत बड़ा विशाल यूनिवर्स है, उसमें कई जगह पे गैस, डस्ट और डेब्री जो पास में आ रहे हैं, ग्रेविटेशन कोलैप्स कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे आप उसको बोलते हो गैलेक्सी. इससे छोटा लेवल जब होता है उस पे आप कहते हो सोलर सिस्टम. इससे और थोड़ा छोटा होगा your planet. Basically, the formation of planet and formation of solar system is together. Formation of planet and the formation of solar system is same, nearly same, but difference क्या है? Difference scale में. वहां पे आप बड़ा नेबुला इमेजिन करो, यहाँ पे आप छोटा नेबुला इमेजिन करो. So if I talk about understanding this, let's say there is a collapse of dust, debris, gas. Okay, 97%. अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, 97 to 99% ऑफ द सोलर सिस्टम वाज ऑक्यूपाइड बाय द सन. ठीक है, मैं आपको नेब्यूला हाइपोथेसिस की तरफ लेके जा रही हूँ.
मैंने फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स समझा दिया है, मैं अब फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट पे जा रही हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट और फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम हुआ कैसे? एक नेब्यूला था, there was whole big nebula. What is nebula? A cloud. A cloud of what? Gas, dust and debris. Suppose this is the whole big nebula. The entire big nebula. It has what? Dust, debris. This is debris. बड़ा सा मेटलिक कंपाउंड है, रॉकी कंपाउंड है, मेटल और रॉक से बना हुआ है डेब्री। आपका डस्ट है, आपकी कुछ गैसेस, there are some gases. Now there is collapse of this nebula under its own gravity. खुद के ग्रेविटी पे ये कोलैप्स कर रहा है। much of 99 to 97 or 99% of it's collapsed to form sun. ओके 97% मास सन पे गया, और बाकी क्या बच गया? जो आपका गैस, डस्ट, डेब्री, जो सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है, बाकी द रिमेनिंग dust, gas, debris, they formed what? They formed the planets. So basically जो हमारा solar system है, this is the part of the same nebula, the whole same nebula, where majority of the mass, 97% of the mass is forming the sun. Gravitational collapse, sun. Rest of the gravitational collapse is leading to various planets. So just same. How do you know it's the same nebula? कोई और nebula से भी बन सकता है. Why are you saying it's the same nebula? Because you'll see that this is your sun. All the planets, they are on the same ecliptical plane. Ecliptical plane उनका same होता है, and then they are moving around the sun. All the planets are moving around the sun. So they might be of same nebula, only then they are gravitationally held. तभी तो एक साथ gravitationally held है, और ऐसे they are revolving around the sun, right? So I am moving on to the next theory, that is nebula hypothesis. Okay, this nebula hypothesis is what explains the formation of solar system, is what explains the formation of our planet. To give the heading, nebula hypothesis. Nebular hypothesis. First point, it mentions that there is a pre-existing nebula. And the formation, there is a pre-existing nebula, and the formation of the solar system began around, and the formation of solar system began around 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago. ठीक है, ये सब कब हो रहा है? नेब्यूला कब बन रहा है? यूनिवर्स इज 13.5 billion years ago. Okay, nebula is around 4.5 to 5 billion years ago. So it says that there was a nebula, pre-existing nebula, that has formed the solar system, and this whole process began somewhere around 5 billion years, 4.5 to 5 billion years ago. Right? Initially, all the matter formed from the universe, was scattered in the form of nebula. The nebula began to contract inward.
due to gravitational collapse. Due to gravitational collapse. Majority of the mass was occupied, majority of the mass was occupied by the sun. Rest of the dust, debris and gas formed the planets. All the planets revolve. Around the sun. In the same plane, plane. This reveals the relationship with the same nebula. ठीक है? This reveals the relationship with the same nebula. What I'm trying to say here is कि same plane में revolve कर रहे तो obviously same nebula से बने. Now you tell me, online the new students, that if something is collapsing under the weight, अपने ही weight में गिर रहा है, gravitational collapse, what will happen? Will the most dense material fall down or will the most dense material come out? अगर कोई चीज अपने weight में गिर रही है तो dense material अंदर की तरफ रहेगा कि dense material बाहर की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ रहेगा. All of you, any confusion here? So when suppose the earth is getting formed from the debris, cloud of debris, gases, dust, and it is collapsing, what will happen? अंदर की तरफ ज्यादा heavy चीज रहेगी. तो अगर मैं अपने अर्थ को पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग माई अर्थ एंड आई से द अर्थ इज व्हाट 6,400 अराउंड 6,400 किलोमीटर रेडियस. व्हाट विल हैपन? वी हैव क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर. तो सबसे हेवी मटेरियल कहाँ जाना चाहिए? इनर कोर में, उससे थोड़ा लाइटर मैंटल में, उससे थोड़ा लाइटर क्रस्ट में. तो यही हुआ है. तो लिखो ये पॉइंट. द नेबुला हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स the layered nature of earth. अर्थ पूरा layered है. The layered nature of the earth. And also explains why density increases in the interior layers of earth. In the interior layers of the earth. In bracket you can write core is more dense than mantle. And mantle is more dense than the crust. Okay. So, I have at least explained you some of the terms. Where did we do the listing? Yeah. We understand certain terms. We understand formation of universe. We understand the formation of solar system. And we understand nebular hypothesis. Terms समझ गए nebula क्या होता है? और भी कुछ terms हैं जैसे meteoroid क्या होता है, meteor क्या होता है, Goldilocks क्या होता है, ठीक है? I believe you would have seen some of the YouTube videos. देखा है कुछ YouTube video? I have 3 YouTube videos यहीं पे इसी चैनल के इसी क्लास के, ठीक है?
वो तीनों यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हो. इन एनी केस आपको और भी सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस या समथिंग एल्स, विल बी देयर विथ यू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, डोंट हैव टू एनीथिंग वरी अबाउट इट. बट देन हाँ, कुछ यूट्यूब वीडियोज भी हैं, ठीक है, दे आर देयर इन द सेम in your group only, so you can watch those also. Now, so at least we understand the formation, we understand the terms, we understand the formation of universe, we understand the formation of the solar system and the planet, nebula, hypothesis. ये समझ लिया हमने. We are understanding the interior of the earth. Before I understand the interior of the earth, let me just understand earth है क्या? What is earth? Earth is crust, mantle, core. क्रस्ट क्या है जिसपे हम खड़े? द प्लेस वेर वी आर स्टैंडिंग इज नथिंग बट द क्रस्ट. क्रस्ट हैज व्हाट? क्रस्ट हैज रॉक्स. रॉक्स, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉक? पत्थर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स? igneous, sedimentary and metamorphic. We understand this: igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. Igneous rock is formed because of the cooling and solidification of lava. लावा कहाँ से आया? अंदर से आया. लावा केम फ्रॉम इनसाइड, मैग्मा केम फ्रॉम इनसाइड, बिकेम लावा, कूल्ड, सॉलिडिफाइड टू फ्रॉम द igneous rocks. We understand igneous rocks. What is metamorphic rocks? बताओ, आपसे पूछ रही हूँ. What is metamorphic rock? There is no sleeping in my class. ठीक है. What is metamorphic rock? If I find you sleeping, I'll catch you. And मैं बोलूँगी बताओ. वो सब पता है इसलिए आपको नींद आ रही है. What is metamorphic rock? We understand three types of rocks, right? Earth is made up of rocks. Rocks are of three types. You have igneous rocks, you have metamorphic rock, you have sedimentary rock. All of you told me igneous rocks is primary rocks. It is primary rocks. It is formed because of the cooling and solidification of magma or lava. Solidification of cooling and solidification of magma and lava. All of you understand the term magma? All of you understand the term lava? ये समझता है magma और lava क्या होता है? अर्थ क्या है? अर्थ 6400 किलोमीटर का रेडियस है अर्थ का अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ये आपका क्रस्ट है. This is the mantle. This is the core. You only told me this is semi-solid. You told me that this is semi-solid. Semi-solid. That means certain amount of mantle can come up. It can come up on the surface. It can come in the crust. Crust का average length 6400 किलोमीटर तो रेडियस है अर्थ का. 6400 किलोमीटर द रेडियस ऑफ द अर्थ. क्रस्ट का एवरेज लेंथ इज अबाउट, अब ये बताओ पुरानी क्लास, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द क्रस्ट? एवरेज पूछ रही हूं. देखो अपने नोट्स खोलो, बताओ व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द क्रस्ट? 17 बोल रहे हो, 70 कह रहे हो, 70 कह रहे हो. व्हाट इज द एवरेज? देखो आप इन क्रस्ट में देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 to 60 किलोमीटर. 35 to 60 किलोमीटर इज एवरेज, राइट? तो मैंटल से कुछ मैंटल आया, ऊपर आ रहा है क्रस्ट की तरफ. अगर क्रस्ट 35 to 60 किलोमीटर डीप है, if it cools within the crust you call this as magma. If it cools on the surface you call this as lava. And you are telling me that the rocks that are formed because of cooling or solidification of magma or lava is called as igneous rocks. मैं rocks की तरफ जा रही हूँ, फिर interior of the earth की तरफ जाऊंगी. पहले rocks, फिर interior of the earth. यहाँ पे एक जो लिस्टिंग की थी इसमें you can also write rocks. इसमें पहले rocks करेंगे, फिर interior of the earth करें. पहले rocks कर रहे हैं.
रॉक्स क्या होते हैं? पत्थर। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। Igneous, sedimentary and metamorphic. You told me igneous rocks are primary rocks. They are formed because of cooling and solidification of magma or lava. Magma is what? That within the crust, within crust के अंदर, within the crust, lava is on the crust. Okay. Then you told me the second type of rock is metamorphic rock. Or the second type of rock is sedimentary rock. What is sedimentary rock? Very good. Sedimentary rocks are the rocks that are formed from coming together of the sediments. Sediments coming together of the sediments. Suppose this was a rock, any rock, sedimentary or igneous or metamorphic. It broke into sediments. It broke into sediments, and then these sediments came up together to form a new rock. You call this as what? You call this as the sedimentary rocks. So what are sedimentary rocks? Rocks that are formed because of coming up of sediments together. Sediments के साथ में इकट्ठे होने के कारण जो रॉक बना है उसको क्या बोलते हो? Sedimentary rock. What is metamorphic rock? Yes. You were to tell me what is metamorphic rock. बताओ. What is? पुरानी क्लास बोल रही मैं बॉन्ड हूँ. ठीक है. What are metamorphic rocks? Metamorphic rocks are the rocks that have been formed because of, it's like sedimentary rock या igneous rocks. Sedimentary rocks or the igneous rocks. Sedimentary rocks or the igneous rocks, when you put a lot of pressure on them, when you put a lot of temperature changes on them, they will convert to a new rock. जैसे कि लाइमस्टोन पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, टेम्परेचर चेंज किया, तो वो क्या बन जाता है? मार्बल. तो लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक पे अगर आप बहुत प्रेशर डाल रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा. सिमिलरली इग्नियस रॉक पे जब आप बहुत प्रेशर डाल रहे हो, टेम्परेचर डाल रहे हो, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा. इग्नियस रॉक्स एग्जांपल जैसे कि ग्रेनाइट. Granite is an igneous rock. If you put a lot of pressure on granite, if you put a lot of temperature on granite, it can change into a new rock called as gneiss. G-N-E-I-S-S. So what are metamorphic rocks? Metamorphic rocks are the rocks that have been formed. The rocks that have been formed due to temperature change or pressure change. Temperature change or the pressure change. On the temperature change or the pressure change on the igneous or metamorphic rock, or igneous or sedimentary rock. On the igneous or the sedimentary rocks. ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक या आपका इग्नियस रॉक पे जब आप बहुत प्रेशर डालो, टेम्परेचर डालो, चेंज कर दो, तो एक नया ही रॉक बन जाएगा. उसको बोलते हो मेटामॉर्फिक रॉक. बेसिकली द वर्ड मेटामॉर्फिक is comes from the word metamorphosis. What is metamorphosis? Change in form. It's like you before preparing UPSC examination and you after preparing for UPSC examination. आपका फॉर्म ही चेंज हो जाता है, आपका आउटलुक ही चेंज हो जाता है, आपका नजरिया ही चेंज हो जाता है. तो वो मेटामॉर्फोसिस है. यू बिफोर गोइंग टू जिम, यू गोइंग आफ्टर टू जिम फॉर 6 months, कंसिस्टेंटली गोइंग. ठीक है, तभी फॉर्म चेंज होगा. तो उसको बोलते हो मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म, चेंज इन द शेप, चेंज इन द प्रॉपर्टीज. ये क्यों हो रहा है? इग्नियस रॉक पे आपने प्रेशर डाल दिया, टेम्परेचर डाल दिया, टेम्परेचर प्रेशर डालेगा तो यू हैव अ न्यू रॉक. सेडिमेंट्री रॉक पे आपने टेम्परेचर डाल दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, यू हैव अ न्यू रॉक. एग्जांपल्स लिख लो कुछ रॉक के. इग्नियस रॉक के एग्जांपल यू हैव
Granite. The example of igneous rocks, you have granite. Example of sedimentary rocks. अच्छा, igneous rock का और भी example लिख सकते हो, andesite भी लिख सकते हो, basalt भी लिख सकते हो. igneous rock का example है granite, basalt, andesite. लिख रहे? एंडीसाइट, ग्रेनाइट या तो बसाल्ट. ये सब किसके एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल क्या है? या बताओ एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. लाइमस्टोन, सैंडस्टोन. और हाँ, और एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, राइट? सैंडस्टोन, limestone, shale. एग्जाम्पल. हाँ, यस. बाकी भी है और सारे. जिप्सम है, चौक है, क्ले है. चौक, अच्छा कॉपी से देख के ही बता रहे हो. चौक, क्ले, आई थॉट याद है. कॉपी से देख के बता रहे हो ना? नहीं याद है. बताओ एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक बिना देख के. नीस, वो तो बता दिया मैंने, बताया ना. नीस, शिस्ट, शिस्ट, मार्बल, ये दोनों मैंने बताए थे, नीस और मार्बल. शिस्ट. और क्ले क्या बनता है? क्ले, स्लेट. क्ले बनता है स्लेट. लाइमस्टोन बनता है मार्बल. सैंडस्टोन बन सकता है शिस्ट. शेल बन सकता है फिलाइट. फिलाइट. सो एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर शिस्ट, SCHIST, शिस्ट. स्लेट, मार्बल, नीस, GNEISS, जी साइलेंट है, नीस. फिलाइट, PHYLLITE, फिलाइट. Okay, this is about the rocks. Now, after rocks, there is an important concept of rock cycle. Rock cycle. So what you have? You have a igneous rock. You have metamorphic rocks. You have sedimentary rocks. Igneous rock, metamorphic rock है the sedimentary rock. Igneous rocks कैसे बनते हैं? Because of cooling and solidification of magma और lava. Metamorphic rocks, जब igneous rock और sedimentary rock temperature change, pressure change होएगा तो आपका बनेगा. So when the sedimentary rock undergoes temperature change or temperature change or pressure change, you'll have the metamorphic rocks. Similarly, when the igneous rocks, they undergo temperature change or the pressure change, then also you'll have metamorphic rocks. So yani igneous rocks can be converted to metamorphic, sedimentary rocks can be converted to metamorphic. Can sedimentary rocks be converted to igneous rocks? अगर ये sediments है, ये sedimentary rock बन गया, if it goes inside, if it is melting, it melted, it led to formation of a new rock, igneous rocks. So sedimentary rock can convert to igneous rock by melting and solidification. By melting and solidification. Similarly, metamorphic rock can also convert to igneous rocks by process of melting and solidification. तो igneous rocks metamorphic rocks igneous rocks बन सकता है, sedimentary rocks igneous rocks बन सकता है.
सिमिलरली इग्नियस रॉक्स क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकता है? इग्नियस रॉक्स टूट गया, सेडिमेंट्स बन गए, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन यानी सेडिमेंट्स का साथ में टूटना, सेडिमेंट्स रहना, सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन, ठीक है, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक्स भी सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, जब साथ में आते हैं कॉम्पैक्ट होना, कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन यानी रॉक का फॉर्म होना, लिथ मीन्स रॉक, lithification is formation of rock. So igneous rocks can convert to metamorphic, metamorphic can convert to igneous, igneous can convert to sedimentary, sedimentary can convert to igneous, sedimentary can convert to metamorphic, metamorphic can convert to sedimentary. ये क्या है? ये है rock cycle. This is rock cycle where none of the rock are permanent in nature. इग्नियस सेडिमेंट्री हो सकता है, इग्नियस मेटामॉर्फिक जा सकता है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री हो सकता है, मेटामॉर्फिक आपका इग्नियस हो सकता है। समझ आ रहा है? आर वी गेटिंग इट? इज इट फाइन? सो सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस rocks. So this just to give you an idea about, okay, एक सेकेंड, ये सबने लिख लिया? Have all of you written this? लिख लो। How many of you are still in your graduation? Graduation हो गई ना सबकी? What is your optional? Public administration, PSI, sociology, कौन कौन है geography optional? ठीक, 2-3 of them. Okay, now igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, all of you done. So if I take down the list, if I take down the list, I understand terms of universe. One of the term is nebula, others you have meteoroid, meteor, बहुत सारे terms, पर हमने nebula से start किया. I understand formation of universe, I understand formation of the solar system. Then I move to understanding rocks. मैंने rocks देखे, 3 टाइप के rocks थे, आपको पता ही था, और rock cycle देखा. अब हमारे interior of the earth की तरफ, interior of the earth. Now, what is the interior of the earth? बताओ. Interior of the earth. We have seen, no? It's what? 6,400 kilometer. 6,400 kilometer. The first layer is crust. The second layer is mantle. And the third layer is outer core and the inner core. Outer core and inner core. एक डाउट है मुझे, सियाल सीमा नाइफ क्या है फिर? व्हाट इज सियाल सीमा नाइफ? वो भी इंटीरियर है? नहीं है, सुना ये? कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल. तो व्हाट इज सियाल? इज इट नॉट द लेयरिंग ऑफ द अर्थ? इट कैन नॉट बी. Basically, if I talk about the topic of the interior of the earth, we know that earth is what? 6,400 kilometer deep. Nobody has gone into the interior. Nobody has gone into the interior to check. So there were various interpretation. There were various ideas. What are the interior of the earth? What is the interior of the earth? किससे बना है?
क्या कॉम्पोजिशन है, कैसी लेयर है, सॉलिड है, गर्म है, सेमी सॉलिड है. वी वर ट्राइंग टू हैव एन आइडिया अबाउट इट. इंटरप्रेट कर रहे थे कि गर्म है कि ठंडी है, सॉलिड है कि लिक्विड है, किससे बनी. तो इसके काफी इंटरप्रिटेशन रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के. एक इंटरप्रिटेशन था कि अर्थ इज, सबसे अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशन था द अर्थ इज सियाल फर्स्ट लेयर, सीमा second layer and knife as the third layer. Sial, Seema and knife. So Sial is what? First layer. Seema is what? Second layer. And knife is what? The third layer. This was one idea. But इसको reject कर दिया गया. Why? Because अगर आप first layer देखते हो, it is not just Sial. It is not just silicon and aluminium. It is also about oxygen. You have calcium, you have magnesium. को बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं. तो आप सिर्फ सियाल जब बोलते हो तो आप बहुत जनरलाइज कर रहे हो, यू आर ओवर जनरलाइजिंग. सो वी रिजेक्टेड द आइडिया. द सेकेंड आइडिया वाज ओके देन व्हाट इज द लेयरिंग. तो लेयरिंग है क्या, अर्थ में कौन सी लेयर्स हैं. अगर सियाल, सीमा, नाइफ नहीं है तो कौन सी लेयर्स. तो आइडिया थी दैट इट इज दैट व्हाट यू कैन से इट इज ईदर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. या तो क्रस्ट, मैंटल और कोर बोलो, या तो आप उसको बोलो लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर. तो आप दो तरीके से लेयर कर सकते हो अपने अर्थ के इंटीरियर को, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, या तो फिर लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, बैरिस्फेयर. आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग. अगर इफ यू वांट टू राइट यू कैन जॉट डाउन, दैट्स फाइन. लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर. दो क्यों कर रहे हैं, एक ही रखो. व्हाई टू? बिकॉज the purpose is different. It's like this. You have layers. It's like skin, my skin. I can layer my skin into first layer, second layer, third layer. Depending on कितनी flexible है, कितनी rigid है, क्या flowy है कि नहीं है. I can also layer my skin on the basis of not the physical properties. पहले वाला जो हमने देखा that was physical properties. Flexible or not, rigid or not, flowy or not. That is one property. I can also layer my skin on the basis of chemical composition. पहली लेयर किससे कंपोज्ड है, सेकेंड लेयर किससे कंपोज्ड है, थर्ड लेयर किससे कंपोज्ड है, केमिकल्स क्या है इसके अंदर. वैसे ही आप अपने अर्थ को भी दो तरीके से लेयर कर सकते हो. यू कैन लेयर योर अर्थ ऑन टू पैरामीटर्स. वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. वन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. व्हेन आई से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इट मींस fluidity, rigidity, stretchable, not stretchable, rigid. Okay, that is mechanical properties. No chemical word used. I can also layer my earth on the basis of the chemical properties. So chemical properties pe when you layer your earth you call this as crust, mantle and core. The crust is chemically different from mantle. Mantle is chemically different from the core. Chemicals अलग है. आप ऐसे कर सकते हो या आप उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे भी लेयर कर सकते हो कि मैकेनिकल यानी क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, नहीं है. ठीक है. तो दिस इज माय इंटीरियर ऑफ द अर्थ. व्हाट वी हैव रिजेक्टेड इज दिस, वी हैव रिजेक्टेड दिस. व्हाट वी हैव एक्सेप्टेड इज बोथ ऑफ दिस. ओके. सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, गिव द हेडिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Earth is not one single rock. Earth is not one single rock. But has many layers. This layered nature of Earth's interior, has been proven by nebular hypothesis. नेबुलर हाइपोथेसिस ने क्या बोला, डेंस नीचे जाएगा,
लाइट ऊपर रहेगा यानी लेयर हो जाएगा, अलग अलग लेयर्स बन रहा है। एक रॉक तो नहीं है अर्थ पे, एक रॉक नहीं है। जो ये आप पत्थर देख रहे हो सारा टाइम नीचे ऐसे ही पत्थर होंगे, नहीं, अलग अलग रॉक्स हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन है, अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। आपको कैसे पता? देखो नेबुला ने भी यही बोला है, नेबुला हाइपोथेसिस ने भी यही बात की। राइट द नेक्स्ट वन, the layering of the earth is such, the layering of the earth is such that the most dense material is in the inner layers, that the most dense material is in the inner layers, while the lighter materials, while the lighter material while the lighter material is near the surface. Is near the surface. तो डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा है कि डेंस मटेरियल अंदर है, लाइटर मटेरियल बाहर। इसमें लिखिए क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। द डेंसिटी इंक्रीजेस इन द इंटीरियर, द डेंसिटी इंक्रीजेस इन द इंटीरियर because of increasing pressure from the surface, increasing pressure from the surface due to compression, due to compression। ऊपर वाला सरफेस क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है। जब नीचे वाले सरफेस को प्रेस करेगा तो ऑब्वियसली क्या डेंसिटी क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन फ्रॉम द आउटर लेयर्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द composition of the layers। कॉम्पोजिशन यानी क्या, ऊपर वाला मटेरियल लाइटर से बना है, अंदर वाला सरफेस डेंसर से बना है। ऊपर वाले में यू हैव सिलिकॉन, ऑक्सीजन, in the interior you have iron and nickel। in case you remember the periodic table, it was hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then it was sodium, magnesium, calcium and other things। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, आपका कॉम्पोजिशन चेंज और आप हेवियर हो रहे हो। तो अंदर वाला जो है वो हेवियर एलिमेंट से बना है, बाहर वाला जो है वो लाइटर एलिमेंट से बना है। अंदर वाला किससे बना है, आयरन और निकल से। बाहर वाला किससे बना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम से। ठीक है, सो द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग इन द इंटीरियर बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। किससे बना हुआ है, व्हाट इज इट एक्चुअली मेड अप ऑफ। राइट, राइट द नेक्स्ट वन, द लेयर्स ऑफ द अर्थ, द लेयर ऑफ द अर्थ। अच्छा, बिफोर आई से move on to this, what is the overall density of the earth? overall क्या density of earth की? हाँ, yes you say, बताओ। 15.5, 3.5, no, it's 5 to 5.5, 5.5 के आसपास हमारा ओवरऑल डेंसिटी अर्थ का है। सो ओवरऑल डेंसिटी आपको पता होना चाहिए अर्थ का क्या है। क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज हम आगे यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। व्हाट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द डेंसर मटेरियल इज इनसाइड, द लाइटर मटेरियल इज आउटसाइड। व्हाई इज द डेंसर मटेरियल इनसाइड, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, composition and the second is compression and therefore the density increasing in the interior। अब इंटीरियर है क्या, सो लिखो आइडियाज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आइडियाज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। First, initial classification,
सबसे इनिशियल क्लासिफिकेशन क्या था? द इनिशियल क्लासिफिकेशन वाज सियाल, सीमा एंड नाइफ. सियाल, सीमा एंड नाइफ. दिस वाज द इनिशियल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज सियाल? आज के जो कॉन्टिनेंट्स है ना, इसको बोलते हो सियाल. कॉन्टिनेंटल फ्लोर. व्हाट इज सीमा? ओशन फ्लोर. पानी नहीं, हाँ, ओशन फ्लोर. एंड mantle and the present day mantle. What is knife? Present day core. सियाल, सीमा एंड नाइफ. ये इनिशियल आइडिया थी. इनिशियल आइडिया क्या थी? पहली लेयर है सियाल, दूसरी लेयर है सीमा. ठीक है, कई कई जगह पे मैंटल बाहर ऊपर आ जाता है, उसको आप ओशन फ्लोर कहते हो. ठीक है, और थर्ड वाला है आपका नाइफ. ये आइडिया गलत है, और ये आइडिया यूज की गई थी किसी से. somebody used this idea and gave the entire theory, पूरी थ्योरी दे दी इस आइडिया को यूज करके. ठीक है, सो सियाल, सीमा, नाइफ. आपके हिसाब से आप बोल रहे हो सियाल, सीमा, नाइफ है. आपकी बात पे भरोसा करके मैंने एक थ्योरी दे दी और मेरी पूरी थ्योरी खराब हो गई क्योंकि मैंने आपकी बात पे भरोसा किया. ठीक है, सो ऐसा होता है. दैट्स देयर. वी ट्रस्ट रॉन्ग पीपल एंड देन वी एंड अप spoiling us, we end up spoiling our time, we end up spoiling our relationship. To trust the right person. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. know the right person and trust the right person. and trust करते करते अपने दिमाग में अपनी vulnerability को कम रखना कि हाँ, मेरे को vulnerable नहीं रहना है. एनी टाइम don't be vulnerable to anything, be very strong, have an alternative plan in mind. ठीक है, not persons, have alternative plans in mind. ठीक, तो ऑल्टरनेट प्लान बना के रखो कि अगर बर्बाद होने की क्षमता है, कर सकता है कोई बर्बाद, तो मैं कैसे बच सकूं, अपने आप को कैसे बचा सकूं. राइट, ओके. नाउ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फर्स्ट वन इज सियाल, सीमा एंड नाइफ. लिख लो. इट वाज द अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशन, इट वाज द अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशन. earliest interpretation. The layering was used by, there is a person called as Wegener. The layering was used by Wegener, W-E-G-N-E-R, Wegener, who gave continental drift theory. ये शब्द सुना है, continental drift theory? New class, have you heard this term? Continental drift theory. कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं, कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट, और ये पूरी थ्योरी थी. तो वेगनर भाई साहब ने ये थ्योरी दी और उस थ्योरी में उन्होंने यूज कर दिया सियाल, सीमा, नाइफ. अब आइडिया ऑफ सियाल, सीमा, नाइफ ही गलत है, तो वेगनर का पूरा थ्योरी गलत हो जाएगा. हाँ, yes, the classification was given by Edward Swiss. Right, initial idea. ब्रैकेट में लिख सकते हो एडवर्ड स्विस. द आइडिया वाज गिवन बाय एडवर्ड स्विस, EDWARD. जब जहां इनिशियल क्लासिफिकेशन लिखा है वहां पे लिख सकते हो एडवर्ड स्विस क्लासिफिकेशन. ठीक है, so this was used by continental drift theory by Wegener. However, later this classification was rejected. So this is what initial classification. Second one is present day understanding. आज की अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है? प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग. Present day understanding of the Earth's interior.
ठीक है, प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर कैसे कर सकते हैं? प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग, वन, you can layer your earth on the basis of chemical properties, and second, you can layer your earth on the basis of the mechanical properties. Chemical properties and mechanical properties. On the basis of chemical properties, यानी क्या? This is based on the composition, based on the composition, chemical composition. Based on the chemical composition, whereas mechanical property is based on the mechanical properties. The mechanical properties like fluidity, rigidity, fluid है कि rigid है, flexible है कि नहीं है, fluidity, flexibility, rigidity. Strength, the strength. ठीक है, इसके बेसिस पे क्या लेयरिंग है? इसके बेसिस पे लेयरिंग है क्रस्ट, mantle and core. Crust, mantle and the core. इसके बेसिस पे क्या लेयरिंग है? इसके बेसिस पे लेयरिंग है लिथोस्फीयर, asthenosphere, lithosphere, 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 asthenosphere, mesosphere, and barysphere. Lithosphere, asthenosphere, mesosphere and barysphere. ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? तो हम पहले इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे. इसको समझना जरूरी क्यों है? बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन दोनों की आइडियाज को यूज करता है. और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों जरूरी है? बिकॉज इस पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं. एक दूसरा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसलिए जरूरी है बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द बेसिक थ्योरी टू अंडरस्टैंड cold mountains, to understand volcanism, to understand earthquake, to understand tsunami कहाँ आएगी, trenches कहाँ बनेंगे. तो सारी चीजों को समझने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझने के लिए आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है. If I talk about, let's say in India, do we have earthquakes? Which is a major earthquake prone belt? Himalayas, Himalayan belt is the major earthquake prone belt. क्यों? प्लेट टेक्टोनिक समझाएगी. In India, do we have volcanism? We have volcanism. कहाँ पे? We have volcanism only at one place, अंडमान निकोबार. क्यों? प्लेट टेक्टोनिक समझाएगा कि क्यों वहीं पे है और कहीं पे नहीं है. ठीक है, तो do we have volcanism in Himalayas? हिमालयस में volcanism होता है? नहीं होता है. ठीक है, बट पहले हिमालयस में कभी volcanism हुआ होगा. पहले हिमालयस में कभी तो भी वॉल्केनिज्म. कैसे पता? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझने के लिए मुझे ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझना जरूरी है. सो अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो पहले समझते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन. बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द अर्थ और द इंटीरियर ऑफ द अर्थ?
This is my continent. This is the earth, ocean surface. This is the continent, again the ocean surface, continent, ocean surface, continent, ocean surface, continent, ocean surface, continent, ocean surface, continent and the ocean surface. This is how actually earth is. earth लगता है आपको ऐसे, बट ऐसे नहीं होता, ठीक है. आपके अर्थ में here in this place, in this place you have continent, you have the oceanic crust, you have the continent, you have the oceanic crust, you have the continent, you have the oceanic crust, you have the continent, you have the oceanic crust, continent, ठीक है. continent and the oceanic crust. So this is your core, this is the mantle, this is the crust. crust यानी क्या होता है? crust में दो टाइप हो सकते हैं. crust में you can have continental crust, crust पे you can have oceanic crust, ठीक है. अपने continental crust और oceanic crust दोनों हो सकता है. mantle को भी आप 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो. यू कैन डिवाइड द मैंटल इनटू अपर मैंटल, मिडिल मैंटल, लोअर मैंटल. यू कैन हैव इनर कोर एंड यू कैन हैव आउटर कोर. तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्रस्ट, मैंटल, कोर है. क्रस्ट दो टाइप की हो सकती है. क्रस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. वन इज द oceanic crust, the other is the continental crust. Crust can be of 2 types, oceanic crust and the continental crust. Mantle can be of 3 types, upper mantle, middle mantle, lower mantle. Upper mantle, middle mantle, lower mantle. Core can be of 2 types, इनर कोर एंड द आउटर कोर, ठीक है. तो जहां लेयरिंग लिखा है ये वहां पे लिख सकते हो डैश करके. क्रस्ट के पास ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. जहां मैंटल लिखा है वहां डैश करके लिख सकते हो. अपर मैंटल, मिडिल मैंटल, लोअर मैंटल. एंड कोर में यू कैन राइट आउटर कोर एंड द इनर कोर, ठीक है. आउटर कोर एंड द इनर कोर. तो हम पहले इसको समझेंगे. विल अंडरस्टैंड दिस. ये है क्या चीज, कहां पे हो क्या रहा है, ठीक है. तो वी स्टार्ट ऑफ विद दिस. यू हैव कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मैंटल, मिडिल मैंटल, लोअर मैंटल. यू हैव आउटर कोर एंड यू हैव इनर कोर. हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं ये सब? वी आर लुकिंग एट ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन. The basis of the chemical composition. Is it fine? No. एक एक करके लिखो फिर. First, crust. Crust. It is of 2 type. It is of 2 type. Continental crust and oceanic crust. It is of 2 type, continental crust and oceanic crust. Continental crust is composed of andesite. Continental crust is composed of andesite, whereas oceanic crust is composed of basalt. It's composed of basalt. क्या है एंडीसाइट और बसाल्ट? इग्नियस रॉक्स. बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अलग इग्नियस रॉक है, कंपोजिशन अलग है उसका, और ओशनिक क्रस्ट में अलग इग्नियस रॉक है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या है? एंडीसाइट. ओशनिक क्रस्ट में क्या है? बसाल्ट. तो ये लोग केमिकली डिफरेंट हो गए, केमिकली डिफरेंट कॉम्पोजिशन से बने. क्रस्ट में सेकेंड पॉइंट लिखो, इट्स द आउटर मोस्ट लेयर. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. Third, it is the most dense layer. It is the least dense layer. It is the least dense layer.
The average thickness is 17 to 20 किलोमीटर. एवरेज कितना है? 17 to 20 किलोमीटर. ठीक है, 17 से 20 किलोमीटर. आपको लगता है क्रस्ट सिर्फ 1 किलोमीटर है? नहीं, क्रस्ट सिर्फ 2 किलोमीटर है? नहीं, 6400 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तो आपका क्रस्ट ही है ऑन एन एवरेज. उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा बड़ा है, ओशनिक क्रस्ट पतला है. द ओशनिक क्रस्ट is thinner in nature, whereas the continental crust is thicker in nature. ओशनिक क्रस्ट थिनर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में? लिखो, एक टेबल बनाओ, मेक अ टेबल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड oceanic crust. Make a table like this. In the continental crust, the first point is thickness. Thickness कितना है continental crust का? कितना thick है वो? 35 to 60 किलोमीटर. Continental crust is 35 to 60 किलोमीटर. Whereas the oceanic crust is about, oceanic crust की thickness is about 1 to 3 किलोमीटर. 1 to 3 किलोमीटर. बहुत पतला है oceanic crust. Continental crust thick है 35 to 60 किलोमीटर. Continental crust, second point लिखें, it is lighter in density. It is lighter in density. डेंसिटी इसकी होगी 2 to 2.5, 2 to 2.7, 2 to 2.7. Continental crust. Density of the oceanic crust will be बताओ 3 to 3.5, 3 to 3.5. तीन चीजें समझो. वी आर सेइंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 2 to 2.5, 2.7. ओशनिक क्रस्ट इज 3 to 3.5. एंड आई एम सेइंग डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज व्हाट? 5.5. ऊपर वाला एक लेयर है जिसका डेंसिटी 2 है फॉर एग्जाम्पल, एक और लेयर है जिसका डेंसिटी 3 है, बट ओवरऑल अर्थ का क्या है? 5. तो इसका क्या मतलब है? अंदर क्या होगा? ज्यादा डेंस मटेरियल होगा. ठीक है, तो ये भी एक प्रूफ है कि ऊपर वाला डेंस है आपका 2.5, 3.5, बट ओवरऑल अर्थ है 5.5. तो इट्स लाइक दैट. ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 40 kgs. अ टीचर एंटर्स CSAT, शी इज 80 kgs. शी इंक्रीज द वेट ऑफ द होल क्लास बाय 10 kgs. यही होता है CSAT में. एवरेज वेट होता है 40 किलो, फिर एक आता है 100 kg का, फिर एवरेज वेट बढ़ जाता है क्लास का, तो आपको वेट बताना होता है एक स्टूडेंट का. यही होता है CSAT में. वही कर रहे हैं कि डेंसिटी ऊपर वाली लेयर की लाइट है पर ओवरऑल अर्थ की ज्यादा है, तो यानी अंदर क्या होगा? ज्यादा डेंस मटेरियल होगा. So you have continental crust and oceanic crust. First is, this is 35 to 60, this is 1 to 2, this is about densities 2 to 2.7, this is about the densities 3 to 3.5. Continental crust is composed of andesite, granite, whereas the oceanic crust is composed of basalt. समझ आया? फर्स्ट लेयर, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट. जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दिस इज ओशनिक क्रस्ट. ये ओशनिक क्रस्ट पे पानी है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट पे वाटर है. वी डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन दिस वाटर. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोर, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक्स, we are just talking about this thing. I'm talking about this one. I'm talking about this pyramid. Okay, this is about the continental crust and the oceanic crust. फिर हम आते हैं सेकेंड वाला लेयर, mantle पे. The second layer is mantle. Okay,
The second layer is mantle. I said I can divide mantle into 2 to 3 parts. I can say you have upper mantle, you can have middle mantle and you can have lower mantle. तो mantle के बारे में लिखते हैं. Mantle extends, first point, it extends below the crust up to 2,900 kilometers. 2,900 kilometers. So I'm saying below the crust mantle starts and mantle extends up to 2,900 kilometers. It is the second layer. It is the second layer from the top. It is the second layer from the top. Third, density is more than crust, while the density is lower than the core. Mantle accounts for 83% of the volume. 83% of the volume of the earth. अगर अर्थ का पूरा वॉल्यूम लोगे तो सबसे ज्यादा मेंटल में 83% of the volume of the earth and 68% of the mass of the earth. तो कैलकुलेट मत करने बैठ जाना 4/3 पाई आर क्यूब से. इट्स नॉट एज सिंपल. ठीक है, तो डोंट कीप ऑन कैलकुलेटिंग कि अरे ऐसे कैसे. इट्स लाइक 2,900 से लेके 6,700 is your core, right? 3,000 से 6,700, that is around 3,700 is core, but mantle is only 2,800. अगर आप 100 से भी कैलकुलेट कर रहे हो, if I'm saying this is let's say 100, okay, and I'm saying this is going up to 2,900, the core is going up to what? 6,400. तो ये डिफरेंस कितना हुआ? The difference is what? बताओ, कैलकुलेट किया था ना 3,500 और ये डिफरेंस कितना है 2,800 या 900. तो आप बोलोगे ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ये कम बड़ा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि फिर आप वो फॉर्मूला लगाओगे P 4/3 पाई आर क्यूब. बोलोगे रेडियस तो इसका ज्यादा है, इसका रेडियस कम है. इतना सिंपल नहीं है. ठीक है, कॉम्पोजिशन अलग है, स्फीयर नहीं है. अर्थ हमारा परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, कॉम्पोजिशन भी अलग है. तो प्लीज वो फॉर्मूला ऑफ स्फीयर मत लगा देना. ठीक है, अंदर मेरा गला मत पकड़ना, आपने गलत बताया. मैं सिर्फ किताब का बता रही हूँ. ठीक है, सो 83% of the volume of the earth is mantle. 68% of the mass of the earth is also mantle. So mantle is the most important area in the earth's interior with respect to area and volume. ठीक है, लिखो. Mantle can be divided into 2 parts or 3 parts. Mantle can be divided into 2 parts or 3 parts. Okay, write the next one, core. Write the next one, core. It is the innermost layer. It is the innermost layer. Dash करके. Heaviest layer. Innermost layer. Heaviest layer. It is composed of nickel and iron majorly. Nickel and iron majorly. Right, the next one, density ranges from 11 to 13
11 to 13 grams per cc। ठीक है, तो कोर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, हेवीएस्ट लेयर है, डेंसेस्ट लेयर है, और इसकी डेंसिटी कितनी है? 11 टू 13। क्रस्ट की डेंसिटी क्या थी? 2 to 2.7, 3 to 3.5, और इसकी डेंसिटी 11 to 13। मैंटल की डेंसिटी कितनी होती है? मैंटल की डेंसिटी वैरी करती है, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, it can vary. So mantel's density can vary. Upper mantle can be 5 to 7, middle can be 7 to 9, and the inner or the lower mantle can be 9 to 11. मैंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा है, मैंटल की डेंसिटी कोर से कम है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लेयरिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर। मैं लेयर देख रही हूँ अर्थ की, यू हैव क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कौन सी सबसे ज्यादा डेंस है? उसमें भी कौन सी डेंस है? कोर में भी कौन सी डेंस है? इनर कोर। उससे कम डेंस क्या होगी? आउटर कोर। उससे कम डेंस लोअर मैंटल, उससे कम डेंस मिडिल मैंटल, उससे कम डेंस अपर मैंटल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में कौन सा डेंस है? आई कैन हियर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 2 to 2.7, और ओशनिक क्रस्ट की क्या है? 3 to 3.5। कौन ज्यादा डेंस है? ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट इज मच मोर डेंसिटी डेंसर, राइट। अब एक डिफरेंस लिख लो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आप डिफरेंस लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, outer core is composed of iron and nickel, and silicate impurities, silicate, SILICATE, सिलिका होता है, सिलिका इज एन एलिमेंट। वो सिलिका एलिमेंट आपको आउटर कोर तक दिखता है, मतलब सिलिका रॉक्स इज फाउंड इन द क्रस्ट, इज फाउंड इन द मैंटल, इज फाउंड इन द लोअर मैंटल, इज फाउंड इन द मिडिल मैंटल, और सिलिका आउटर कोर तक आपको मिलता है। सो आई एम सेइंग द कंपोजिशन ऑफ द आउटर कोर इज निकल प्लस आयरन प्लस सिलिकेट इंप्योरिटीज, whereas the composition of inner core, इसी में इनर कोर में क्या कॉम्पोजिशन है? आयरन प्लस निकल, आयरन एंड निकल। इनर कोर प्योर है, आयरन एंड निकल, अभी तक जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज, द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज, द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज 11 to 11.5, 11 to 11.5, whereas the density of the inner core is, 13 to 13.5, 13 to 13.5। आउटर कोर कहां से कहां तक है? आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम 2900 to 4800, it extends from 2900 to 4800, whereas the length of the inner core is from 4800 to 6400, 4800 to 6400। If I talk about the composition, तो आउटर कोर इनर कोर का कॉम्पोजिशन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक में सिलिकेट इंप्योरिटीज है, एक में नहीं है। एक की डेंसिटी अलग है, दूसरी की भी डेंसिटी अलग है। एक का लेंथ अलग है, दूसरे का लेंथ अलग है। इफ आई टॉक अबाउट आउटर कोर हियर, द आउटर कोर, दिस इज फ्लूइड इन नेचर, बहता है, फ्लूइड इन नेचर, मोल्टन इन नेचर, फ्लूइड इन नेचर, वेयर एज इनर कोर इज सॉलिड इन नेचर, it is solid in nature। समझ आया आउटर कोर एंड इनर कोर? राइट वन पॉइंट।
The temperature of the outer core. The temperature of the outer core is about 4,000 to 4,500 degrees Celsius. 4,000 to 4,500 degree Celsius. The temperature in the inner core is about, घर जाके पढ़ाई कीजिए, इसलिए मार्क किया, नोट्स लिखे, अच्छा लेक्चर, ओके. So you did not, were you not there in the live class? The temperature of the outer core is about 6,000 to, क्या खोल के बैठे हो, 6,000 to 6,500 degrees Celsius. to 6,500 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर आउटर कोर का कम है, टेम्परेचर इनर कोर का ज्यादा है. बट जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो फ्लूइड होना चाहिए और जिसका टेम्परेचर कम है वो सॉलिड होना चाहिए. तो मैंने उल्टा तो नहीं लिख लिया, मैं कह रही हूं इसका टेम्परेचर कम है बट ये फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है बट ये सॉलिड है. ऐसा कैसे हो रहा है? हाउ इज दिस हैपनिंग एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट? ऐसा हो क्यों रहा है, इसके कारण, पहले तो ऐसा हो क्यों रहा है और इसके कारण होगा क्या? तो आई एम सेइंग द टेम्परेचर ऑफ आउटर कोर इज 4,500 डिग्री सेल्सियस, yet it is fluid in nature because of silica. And I am saying the temperature of the inner core is more, yet it is solid in nature because it does not have silica. तो सिलिका करता क्या है? सिलिका tends to reduce the melting point. मतलब कोई चीज अगर 5,000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती और लेट्स से कोई चीज अगर 7,000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती, ओके, अगर उसमें सिलिका आ गया तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग इवन एट लेट्स से 4,000 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ योर आउटर कोर हैज सिलिका, so it will start melting even at 4,000 degrees Celsius. Inner core does not have silica, so it despite high temperature of 6,000 degrees Celsius, it is not melting and it is solid in nature. So this is to do with what? This is to do with the silicate impurities. समझ आ रहा है? तो silicate impurities कर क्या रही है? Outer core को fluid बना दे रही है, outer core को liquid बना दे रही है, क्योंकि 4,000 पे ही वो मेल्ट हो जाएगा आयरन एंड निकल. बट अगर प्योर आयरन एंड निकल है तो वो 7,000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा. इतना कंप्रेशन, इतना प्रेशर है कि इट इज मेल्टिंग लेट्स से एट 7,000 डिग्री सेल्सियस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट व्हाई इज आउटर कोर फ्लूइड एंड लिक्विड डिस्पाइट लोअर टेम्परेचर्स? क्यों? क्योंकि सिलिकेट इंप्योरिटीज उसको मेल्ट कर देगी जल्दी से. इट विल रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, right? But I think many of you are online new class. How many of you are confused with this? एक एक करके हाथ उठाओ, सब उठाएंगे, because I can see face पे. मैं तो देख ही पा रही हूँ. बताओ क्या confusion है, बोलो. क्लियर है? क्लियर है? Right? Okay, fine. Then right. Though the outer core is at lower temperature, though the outer core is at the lower temperature, than the inner core, it is molten because of, or it is fluid because of silicate impurities. Silicate impurities, which reduces the melting point,
which reduces the melting point. अब ये क्यों है तो समझ आ गया, ये टेम्परेचर कम है पर फ्लूइड का, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? Why is it even important? Why am I even studying this? Because it has a very important consequence like this. See, this is your inner core, which is iron rich, iron and nickel rich. This is your outer core, which has iron, which has nickel plus silicate. And this is fluid in nature, this is solid in nature. This is solid, this is fluid. The temperature is about what? 4500 डिग्री सेल्सियस. यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि इसका जो बेसिक फॉर्म है, it is plasma like. What is plasma like? Electrons are free. Electrons have become free. Itna high temperature that the electrons have become free. Proton, neutron, electron are now free, and now electron are rotating. Okay, so it's like this. Electrons अगर free हो गए हैं और वो एक direction में travel कर रहे हैं, right? Electrons are free and now they are traveling in one direction. When they are traveling in one direction, what will be generated? You will have generation of electricity, electric currents. Electric current क्या होता है? Flow of electron in one definite direction. So you have electric current. Because of electric current, what will be generated? You will also have magnetic field. You have magnetic field. Magnetic field का डिटेक्शन हुआ कैसे था? बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, बैठे हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे थे, सामने एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा था, उन्होंने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी चालू हुई सर्किट में, तो मैग्नेटिक कंपास डिविएट हुई. ही वाज वेरी शॉक्ड कि अभी तो मैग्नेटिक लाइंस क्यों डिविएट हो रही है, देयर इज नो मैग्नेटिज्म. ही स्विच्ड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट. The magnetic compass came at rest. Again he switched it on. Again the magnetic needle started dwindling. Again he switched it off. The magnetic compass was at rest. Magnetic compass तो magnetic lines दिखाता, but यहाँ तो कोई magnet नहीं है, तो क्यों magnetic lines आ रही है? It's because electricity generates its own magnetic field. And what is electricity? Nothing but the flow of electron in one definite direction. इधर क्या हो रहा है? बहुत high temperature electron free हो गए, they start moving in one definite direction. Generation of electric current, generation of magnetic field. So you are trying to say that my earth behaves like a magnet? Yes, my earth behaves like a magnet. This is my earth, this is the interior of the earth that I was studying. My earth behaves like a magnet. And earth has what? Earth has magnetic lines. Earth has a magnetic north pole, earth has a magnetic south pole. The earth has magnetic field, earth has a magnetic north pole, earth has a magnetic south pole. अर्थ के पास एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और अर्थ के पास एक मैग्नेटिक साउथ पोल. ठीक है, यू हैव अर्थ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल विथ अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द आउटर कोर एंड द इनर कोर. अरेंजमेंट क्या है? फ्लूइड आयरन रिच outer core is moving around solid iron rich inner core. So there is some movement, there is electricity that is generated, there is magnetism that is generated, and the earth behaves like a dipole magnet. क्यों important है ये? Because these magnetic lines protects the earth from solar flares. So you have these solar flares, the charged particles coming from the sun. Solar flares are charged particles coming from the sun. So इससे जो charged particles आ रहे हैं ये हमारे अर्थ की लाइफ को स्ट्रिप ऑफ कर देते. There would have been no life on the earth had it not been magnetic
field. So these magnetic lines interact with the solar and then they deflect it and then they deflect. उसको deflect कर देते हैं दूर तक. तो आपकी जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है वो ऐसे दिखता है. Earth's magnetism looks like this. You have a magneto tail. Magneto वो इंटरैक्ट कर रहा है, वो डिफ्लेक्ट कर देता है सोलर. और जब मैग्नेटिक लाइन और सोलर, जब मैग्नेटिक लाइन और ये सोलर पार्टिकल्स जब इंटरैक्ट करते हैं एट द पोल्स, यू हैव व्हाट, यू हैव ब्यूटिफुल कलरफुल लाइट्स, green colored light, beautiful colorful lights, green color lights called as aurora. Aurora australis in the southern hemisphere, aurora borealis in the northern hemisphere. समझ आ रहा है? Interior of the earth is linked to geomagnetism. Interior of the earth is linked to auroras. Interior of the earth is linked to saving up of life on the surface of earth. यही magnetic lines, these are also used by birds, fishes. The birds, have you ever imagined why they, every time the birds that come in India in winters, Bharatpur mein, every time they come from Siberia and they land at Rajasthan, Bharatpur, they don't land up at Odisha. क्यों नहीं आते? हाँ मतलब they don't land up in, let's say they don't land up in Vidarbha, my region. Birds नहीं आते, वहीं क्यों जाते? Because of certain magnetobiosensors. ठीक है, they can sense the magnetic field. By sensing the magnetic field, by sensing the stars, the direction of the stars, by sensing the direction of sun, the direction of the moon, they know कि कहाँ north है, कहाँ south है, कहाँ जाना है, right? So magnetism is important for what? For the survival of life, for the movement of birds and fishes, for protecting us from the harmful solar charged particles, and also the one effect is beautiful colorful lights that you see at auroras. People go specially to Norway, specially to Scandinavian place to see these bright light. ठीक है, तो लिख लो ये, write something about it. We've written that. क्या लिखा last line? What did we write last? Okay, now write the one. The fluid outer core is moving around solid iron rich inner core, comma, this arrangement is responsible for creation of magnetic field around the earth, and therefore the earth behaves like a dipole magnet. In bracket you can write geomagnetism. Okay, right? The earth has a magnetosphere. Of at least 60,000 kilometer. 60,000
kilometer. What I'm trying to say, the magnetic sphere of the earth is at least, यहाँ तक अगर आप देखो, is at least 60,000 किलोमीटर. यहाँ पे मैग्नेटो टेल तो और लंबा जाती है, तो यानी कोर कहाँ से 6,400 किलोमीटर. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर अर्थ, one entire earth surface, and then it also extends up to atmosphere, 60,000 kilometer. That is the magnetosphere. ठीक. The origin of the magnetic field, the origin of the magnetic field is because of the arrangement of the outer core and inner core. Is because of the arrangement of the outer core and the inner core. Right? The outer core is extremely hot. In bracket you can write 4,500 degrees Celsius and is in the plasma state. Therefore, electrons are free. Therefore, the electrons are free. Full stop. Outer core is rotating. Outer core is rotating around inner rich, around the inner iron rich core. Iron rich inner core. Bracket you can write, bracket में write the outer core's movement, around the inner core, is because of Earth's rotation. This arrangement leads to natural geoelectrical magnetic field. आपको एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है अराउंड दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, ऑल्सो एक्सटेंड्स इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर तक एक्सटेंड करते. द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, is that it protects the earth from harmful UV radiation, which could have stripped the planet, life, which could have split the planet's life. Second, इसी में the magnetic lines are used by navigators, comma fishes, comma birds,
birds, right? Write the next point. The interaction of the magnetic lines, the interaction of the magnetic lines and the solar wind, and the solar wind produce a bright display of light, produce a bright display of the light display of light, bright display of light called as aurora australis, AORORA, aurora. Aurora australis and aurora borealis. Aurora australis and aurora borealis. Aurora australis in the southern hemisphere, aurora borealis in the northern hemisphere. ठीक है, ये सब क्या था? This was the Earth's interior as per the chemical properties. We've done Earth's interior as per chemical properties. What we need to move on is Earth's interior based on the mechanical properties. देखो, the Earth's interior based on the mechanical properties. Earth interior based on chemical properties हो गया, Earth interior based on the mechanical properties. Now, let's understand it like this. मैं पहले plot कर रही हूँ Earth's interior based on chemical properties. You can also draw this with me. This is the continental crust. This is the oceanic crust. This is the continental crust. This is the oceanic crust. You have upper mantle, you have middle mantle, inner या lower mantle, outer core, you have inner core, outer core and the inner core. यही था continental crust, oceanic crust, upper mantle, middle mantle, lower mantle, outer core and the inner core. This is what? The layering based per the chemical properties. This is the layering based on the chemical properties. ये chemical properties पे crust है ना, crust mantle core. अब इस पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है. क्रस्ट मैंटल कोर इज केमिकल प्रॉपर्टीज. कॉम्पोजिशन अलग है, क्रस्ट का, ओशनिक क्रस्ट का, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, मैंटल का, कोर से, कोर का, आउटर कोर और इनर कोर का. केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्रस्ट, मैंटल और कोर है. If I say mechanical properties, what are mechanical properties? Basically, it is about, mechanical properties is about, you have continental crust plus the oceanic crust plus the upper part of upper mantle. ठीक है, तो अगर बेसिकली मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर देखूं तो वी हैव व्हाट, लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर और बैरिस्फीयर. बट लिथोस्फीयर है क्या? लिथोस्फीयर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, lithosphere is continental crust plus oceanic crust plus upper part of upper mantle.
ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये एक लेयर की तरह बिहेव करता है। मैकेनिकल वाइज इट इज अ सिंगल लेयर, ठीक है। मैकेनिकल वाइज इट्स अ सिंगल लेयर, यानी लिथोस्फेयर बेसिकली मैकेनिकल वाइज आई एम सेइंग इट्स अ सिंगल, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इट इज अ सिंगल लेयर। व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? बेसिकली ये जो फर्स्ट लेयर है ये लिथोस्फेयर है, दिस इज लिथोस्फेयर, मैकेनिकली सेम है। यानी क्या सेम है? इट इज द फर्स्ट लेयर इज सॉलिड, it is solid, it is rigid, it is solid, it is rigid, but it is brittle, just like your glass plate जिसमें हम खाना खाते हैं, ग्लास प्लेट्स, वो सॉलिड है, वो रिजिड भी है, बट वो ब्रिटल हो सकता है, इट कैन बी ब्रोकन। सो इट इज सॉलिड, इट इज रिजिड, इट इज brittle, that is mechanical wise. So you have continental crust, oceanic crust plus the upper part of upper mantle. What is asthenosphere then? Asthenosphere is the remaining part of the upper mantle. The remaining part of the upper mantle becomes your asthenosphere. So what is asthenosphere? It is the remaining part of upper mantle. The remaining part of upper mantle is asthenosphere. समझ आया? लिथोस्फेयर यानी क्या, एस्थेनोस्फेयर यानी क्या? I am trying to understand the layering of the earth on the basis of mechanical properties. First layer on the basis of mechanical properties is lithosphere. What is lithosphere? Continental crust plus oceanic crust plus the upper part of upper mantle. What is asthenosphere? The remaining part of the upper mantle. What is mesosphere? Mesosphere is middle mantle and the lower mantle. Middle mantle plus lower. What is outer core? And inner core. The outer core and inner core combined together is known as barysphere. This is the outer core plus the inner core. मैकेनिकल वाइज क्या लेयरिंग है? लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बैरिस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट प्लस द अपर पार्ट ऑफ अपर मैंटल. एस्थेनोस्फेयर क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अपर मैंटल. मेसोस्फेयर क्या है? मिडिल मैंटल एंड द लोअर मैंटल. ये बनाना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है. बैरिस्फेयर इज द ओशनिक क्रस्ट प्लस द inner core and the outer core. Inner core and the outer core. We started at what? 2:30? 2 o'clock? तो 4 बजे छोड़ना था क्या? ठीक है. I thought we started at 2:30. We started at 2:15. No, we started at 2:15. रुको. हाँ, we started at 2:15. 2:15 को हमने स्टार्ट किया. मैंने सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया, ठीक है. मुझे कोई टाइम लैप्स नहीं हुआ है. It's called as a state of flow. When you forget the time. I believe आप लोग जब पढ़ाई करते होगे तो आपको होता होगा. टाइम पता ही नहीं है कहाँ चला गया, पता ही नहीं पड़ा. इतना कंसंट्रेशन था, इतना टाइम हो गया पता ही नहीं पड़ा. दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ फ्लो. व्हेन यू अचीव हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपको टाइम का पता नहीं पड़ता है, ठीक है. होता होगा ना ऐसा. यू फील प्रेशराइज टू से यस कि हाँ होता है.
समझ ले नहीं होता है. Okay, fine. So interior of the earth, lithosphere, asthenosphere, mesosphere and barysphere. ठीक है, I'll keep it like this. बहुत आपने नहीं बनाया तो बना लेना. ठीक है, we'll cover the interior of the earth, we'll cover continental drift theory, we'll cover plate tectonics and then we'll move on to the other topic. तो हमने कवर कर लिया, काफी कवर कर लिया, हम काफी आगे आ गए हैं. अब तो बीच में नहीं करेंगे, कवर कर लेंगे, भागना नहीं है. बच्चे, पुराने बच्चे सोच रहे हैं कि मैं भाग जाऊं. ठीक है, सम ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि रिविजन हो रही है. आई विल गो. याद आप नहीं रिवाइज करोगे 2-2.5 घंटे में इतना, तो आप बैठ के सुन लो. ठीक है, I've counted people, how many of them are here. ठीक है, so I'll again count after the break how many of you are here. ठीक है, so let's take a break. We have a class, no? We have the second class. We have a second class also. ठीक है, don't try to trap me कि नहीं है. We have a second class also. Let's take a break. You want a break of what? Half an hour? Let's take a break of 20 minutes. We'll meet at, आप आते आते half an hour कर ही लोगे. So let's take a break of 20 minutes. It's 4 what? It's 4:30. ठीक है, we'll meet at 4:50. कहीं मत जाओ, यहीं बैठो, बाहर धूप है. ठीक है, 4:50 we'll meet, right? Is it fine? Oh. First tell me, how many of you have read NCERT? How many of you opened NCERT, class 11th NCERT? Open तो की है, ठीक है. कितनों ने पढ़ी है? How many chapters done? You've completed till what we've completed? All of you? पूछ ले कुछ भी. That is what? कितने chapter पढ़ लिए? Chapter 3 till unit 3. You've done till unit 3. Fourth unit is climate. You've done that exogenic features. Just overview किया. We'll cover that exogenic features, then we'll move to climate. ठीक है, we'll cover that first because it is at least important to visualize. How many of you have covered unit till unit 3? कितना पढ़ा है? 2 चैप्टर पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा है. ऐसे मत करो. रीड, कुछ लिखे हैं, आंसर्स लिखे हैं, कुछ लिखे आंसर्स. ठीक है. Those who are coming for the first time to the class, see chapter 6 to chapter 10, sorry, class 6 to class 10th NCERT is very easy. It's very easy. There's no specialization. मतलब 6 to 10th वाले बच्चों के लिए लिखा है तो बहुत easy है. I believe वो basic terms आपको पता होने चाहिए. ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, पोल माउंटेन्स क्या है, रिफ्ट वैली क्या होती है. ठीक है, नहीं पता? ठीक है, तो वील इनको भी नहीं पता था, हमने बीच बीच में कवर किया है, तो वील कवर. बट एटलीस्ट आप इतना कर लो कि क्लास 6 टू क्लास 10th वाली जो एनसीईआरटी है एक बार रीड कर लो. इट विल नॉट टेक मच टाइम. इट विल नॉट टेक 3 to 4 days actually if you read it. ठीक है, तो I don't know if I told you this in my class when I was taking a class at in Delhi. So I used to say this कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन लगेंगे, कर लो. But that student did not come to class. Like नहीं पढ़ाई की, ना क्लास आए. After the class got over, then he messaged me कि हाँ मैम 1 ही घंटे में हो जाती है 6th क्लास की NCERT अगर हम पढ़ लेते हैं. तो मैंने तब पढ़ लिया होता
तो शायद मुझे फायदा हो चुका होता। अब मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा हूँ, तो इज लाइक करना तो है ही, तो पहले कर लो, द अर्लियर द बेटर, ठीक है। इट विल नॉट टेक मच टाइम एंड व्हाट डू आई से टू दैट स्टूडेंट, आई सिंपली स्माइल्ड, क्या बोलूँ अब, ठीक है अब जो हुआ हुआ, पॉइंट इज कर लो अभी, इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल टेक 3 to 4 days। इफ यू डू 6 क्लास एनसीईआरटी इन 1 day, 7th क्लास 1 day, ठीक है, 8, 9, 10th, 8, 9, 10 दो दिन भी अगर लगाते हो, देन ऑल्सो इट्स अ मैटर ऑफ 7 to 8 days। So try to complete, try to read. I am here for some time. So I believe आप पढ़ोगे NCERT and I'm generally here in the office only. So you can ask doubts also. पढ़ लोगे तो doubts पूछोगे। तो टारगेट सेट करो अपना कि आज घर जाके, आज नहीं, आज तो लेट हो जाएगा, ठीक है, कल घर जाके 6th NCERT क्लास की NCERT पढ़ लेंगे। It will not take much time. 7th क्लास की NCERT पढ़ लेंगे। I'm not telling you to make notes. At least read and underline. At least ask questions from there, right? So and then you can discuss. तो 6th कल पढ़ लेंगे, 7th कल उसके एक दिन बाद कर लेंगे, यहीं बैठ के पढ़ते हैं, many of you sit here and study, do that, okay? So take a break, you have another what 20 minutes, so we'll meet at 4:55, ठीक है, we'll meet at 4:55, 5 बजे नहीं, we'll meet at 4:55, ठीक है। So all of you, thank you.